हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 दैट इज टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What are the children and the teacher doing in the picture? आप देखो यहाँ पे एक पिक्चर है ना. So you can see a lot of people are cleaning the park ना. Teacher, student, everyone. आप देखो सभी लोग क्या कर रहे हैं, पार्क को क्लीन कर रहे हैं. कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कचरे उठा रहा है, राइट. सो एवरीवन इज हेल्पिंग एंड क्लीनिंग द पार्क. ठीक है. सो what are the children and the teacher doing in the picture? So the children and the teacher are cleaning the park. Park को साफ कर रहे हैं. What are they clean? Why are they cleaning the park? वो पार्क को क्यों साफ कर रहे हैं? So they are cleaning the park to keep it clean and healthy. अब देखो आपको कहाँ जाना पसंद है, एक साफ पार्क में या फिर एक गंदे पार्क में? Obviously everyone likes to go to a clean park. हम सभी को clean park में जाना पसंद है. So they are cleaning the park to keep it clean and healthy. Have you ever seen piles of waste lying around your home or school? क्या आपने कभी देखा है बहुत सारा वेस्ट एक जगह पे जमा हो आपके घर के पास या आपके स्कूल के पास? So जनरली वी सी दीज थिंग्स बट दिस इज नॉट गुड ना. जनरली हम ये देख लेते हैं कि बहुत सारा वेस्ट एक पाइल बना के ना कहीं कोने में है हमारे घर के पास या स्कूल के पास, राइट. सो यस, आई हैव सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट नियर रोड्स ना एंड ओपन एरियाज विच इज नॉट गुड. हमें ये सारा जो कचरा है ओपन एरिया में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए. नेक्स्ट, Have you ever thought about how this waste is created? क्या आपने सोचा है कि ये सारे वेस्ट कैसे क्रिएट होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था ना, वेस्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम आवर डेली एक्टिविटीज ना. डेली के जो एक्टिविटीज हम करते हैं ना उससे वेस्ट जनरेट होता है, लाइक ईटिंग ना, कुकिंग, शॉपिंग एंड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. जितना हम शॉपिंग करते हैं या फिर कुकिंग करते हैं ना, all these activities generate waste. Even when you are replacing some old items with the new ones, जब भी आप पुराने आइटम को न्यू चीजों से रिप्लेस करते हो, जैसे आपके पुराने कपड़े, पुराने खिलौने, सारे आप ये हटाकर कुछ नया, नए कपड़े लाते हो, नए खिलौने लाते हो, तो जो पुराने कपड़े खिलौने होते हैं वो क्या होता है, वो एक वेस्ट बन जाता है. ठीक है. Now, next is activity 1. Recall different activities that you and your elders do during the day. How do these activities create waste? आप recall करो कि आपके elders और आप क्या-क्या activities दिन भर में करते हो and वो सारे activities कैसे waste generate करते हैं. ठीक है. Activities such as cooking, eating, studying, shopping and cleaning create waste ना. जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं दिन भर में उससे क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, राइट. लाइक वेजिटेबल पील्स जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, रैपर्स व्हेन यू आर ईटिंग सम स्नैक्स, a lot of a paper, plastic, all these wastes are generated. Okay. Next, what do we do with the waste? हम क्या करते हैं वेस्ट के साथ? We collect it in the dustbin and dispose of it properly. Waste तो generate होगा. What you have to do, we have to dispose it in a proper place. हमें properly dispose करना है. ये नहीं कि हमें इधर उधर घर के बाहर कचरा फेंक देना है. No, you have to properly dispose in a proper place. Okay. Next, okay, so how is waste created? This question we have discussed, right? The next, अब देखो कि you can see a lot of a waste
garbage piles around your home or a school or in the neighborhood. Now, you can see a lot of waste. So, how do you feel about it? आपको कैसा लगता है? So, obviously we don't like ना अगर घर के आसपास या स्कूल के आसपास you see a lot of a waste or a garbage piles, we don't like it ना. So I feel sad and concerned because waste makes our surrounding dirty. So जब भी हम ये सब देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? We feel sad, हमें दुख होता है, ठीक है? And also we are concerned because it is making our surrounding dirty. It can harm people ना. ये लोगों को भी harm करता है ना, because all these waste garbage piles attract lot of mosquito flies which is spread a lot of diseases ना. It harms animals also. Animals, अब देखो animals, बहुत सारे animals वो they come in search of a food and they eat these plastics and they die, ठीक है? And it is harming the nature, ठीक है? It is harming the nature. Next question. Do you think we can do something about it? So क्या आपको लगता है कि हम कुछ इसमें कर सकते हैं? So yes, everyone can do something, ठीक है? हम सभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं. So yes, we can reduce waste. So हम waste को reduce कर सकते हैं. Try to minimize, आप waste कम produce करने की कोशिश करो. Like instead of using plastic bags, you can use your cloth bag or a jute bag. Instead of using the plastic bottles which after a few use you have to throw it, you can use a steel bottle or a copper bottle आप use कर सकते हो ना. Try to use a dustbin, recycle materials ना. There are a lot of collection centers होते हैं, तो there you can give your paper items, your uh, glass bottles, glass jars, plastic bottles, ना tin cans और a metal waste, जितने भी जो waste है ना, so this type of a waste you can give it to the recycling center. There they recycle. वो क्या करते हैं? फिर से कुछ नए objects बना देते हैं, ठीक है? Reusing items. Try to reuse the items. Instead of throwing it, try to reuse before throwing it. Avoid unnecessary plastic. So plastic is the main problem of all the pollution. So try to minimize the use of the plastic items. कुछ भी plastic के bags या plastic के bottles, plastic toys, try to minimize its use. Next. Mm, Observe your surrounding. This is activity 2. Observe your surrounding. So आपको अपने surrounding को observe करना है. Then you have to answer this question. How clean are the surrounding of your school? So आपके स्कूल के आसपास का जो सराउंडिंग है, how clean it is, कितना साफ है? So you can write according to your surrounding. आपका स्कूल किस एरिया में है और वहाँ का सराउंडिंग कैसा है? Is it neat and clean or it is dirty? ठीक है? So the surrounding of my school are clean and well maintained. So it is clean and well maintained. Do you find waste lying in or outside your classroom और ऑन द स्कूल ग्राउंड्स? क्या आपको वेस्ट कहीं दिखता है आपके क्लास के अंदर या क्लास के बाहर या फिर स्कूल के प्लेग्राउंड में? सो नो, वेस्ट इज यूजुअली थ्रोन इनटू द डस्टबिन. आप देखो स्कूल में हर क्लास में डस्टबिन्स होते हैं, सो वी थ्रो ऑल आवर वेस्ट इन द डस्टबिन्स, ठीक है? इट्स गुड टू यूज द डस्टबिन. नेक्स्ट. Draw or paste a picture of a locality. Identify the places where there is a garbage or wastewater or smoke by circling them in red.
सो आपको या तो आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप पेस्ट कर सकते हो पिक्चर ऑफ अ लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी का पिक्चर, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई वेयर द वेस्ट इज, ना वेस्ट कहाँ पे कलेक्टेड है या फिर कहाँ पे वेस्ट वाटर कलेक्टेड है या स्मोक। सो आइडेंटिफाई दिस बाय सर्कलिंग देम इन द रेड, आपको रेड से सर्कल करना है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द वेस्ट गेट्स देयर, आपको फाइंड आउट करना है कि वेस्ट कहाँ से आया, जैसे कि गार्बेज, सो द पीपल ऑफ द लोकेलिटी इज थ्रोइंग द गार्बेज देयर। So like that you have to find from the where the waste is getting there at that point, ठीक है, कहाँ से waste आ रहा है। So you do this by yourself, ठीक है। Next, activity 3, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट। सो आप कैसे हेल्प कर सकते हो वेस्ट को रिड्यूस करने में। सो इन मेनी वेज ना, लाइक यूज क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक बैग, आप क्लोथ बैग या जूट बैग यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स की जगह। अवॉइड बाइंग अननेसेसरी आइटम्स, ना कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ना हो, नहीं आती है ना। सो बिफोर बाइंग जस्ट थिंक ट्वाइस, आप सोचो कि इस चीज की मुझे जरूरत है कि नहीं। ओके, सो अवॉइड बाइंग अननेसेसरी आइटम्स। यूज रीयूजेबल बॉटल्स एंड कंटेनर्स, ना ट्राई टू यूज रीयूजेबल बॉटल्स जो बार बार हम यूज कर सके। डोंट use any plates or a bottles or a containers that is use and throw, after a few days of use you have to throw it, don't use that type। so generally हम देखेंगे कि जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं या फिर बॉटल्स होते हैं, आप थोड़ा यूज के बाद ही वो खराब हो जाते हैं एंड यू हैव टू थ्रो इट, सो अवॉइड यूजिंग दैट, ठीक है। Avoid single use plastic. Single use plastic means after a single use you have to throw it, like जैसे कि हम यूज एंड थ्रो प्लेट्स यूज करते हैं ना, खाने के बाद इमिडिएटली यू हैव टू थ्रो इट, यू कैन नॉट यूज इट अगेन। सो आप क्या कर सकते हो, डोंट यूज दैट टाइप ऑफ अ प्लेट्स बाउल और ग्लास ना, क्रॉकरी आइटम आप उस टाइप के यूज नहीं करो। so instead of that you try to use glass plates or steel plates, so which will not create any waste ना, ये सारे आइटम वेस्ट नहीं जनरेट करेंगे। so avoid the single use plastic। next, so आप देखो कि we can help in reducing the waste, we can keep our surrounding clean in many ways ना, हम अपने सराउंडिंग को बहुत तरीके से साफ रख सकते हैं, राइट। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्लीननेस ड्राइव ना, हम देखेंगे फ्रिक्वेंटली कम्युनिटी में लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और लोकेलिटी को साफ करते हैं, राइट। एंड दे शेयर the toys, old toys, books, clothes to the needy people ना। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं या खिलौने होते हैं या बुक्स होते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, बट देयर आर द पीपल हु नीड देम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक्स या फिर ना टॉयज, सो यू कैन प्रोवाइड देम दीज थिंग्स, ठीक है। सो इन व्हाट अदर वेज कैन यू हेल्प, ठीक है, आप और भी किन तरीकों से आप हेल्प कर सकते हो। सो डोनेट ओल्ड क्लोथ्स टॉयज एंड अ बुक्स। so how we can help in reducing the waste, or how we can help to keep the सराउंडिंग क्लीन, हम कैसे अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं, बाय डोनेटिंग ओल्ड क्लोथ्स टॉयज एंड बुक्स। सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द डस्टबिन ना, हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं टू द नीडी पीपल। रीयूज नोटबुक्स विद द ब्लैंक पेजेस, कई बार हम देखते हैं कि बुक्स या फिर जो नोटबुक होते हैं उसमें बहुत सारे पेज लेफ्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू यूज दोज लेफ्ट पेजेस, use both side of the paper, so whenever you are writing try to use the both side of the paper instead of writing on just a one side। next, how can you reuse the things to reduce waste।
सो आप कैसे चीज़ों को रीयूज कर सकते हो सो दैट यू कैन रिड्यूस द वेस्ट? सो आप क्या कर सकते हो? रीयूज ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर पैकिंग। सो पैकिंग के लिए अलग से कोई स्पेशल पेपर आप मत खरीदो। यू कैन यूज द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर पैकिंग। रीयूज बॉटल्स फॉर स्टोरिंग वाटर। ना बहुत सारे आइटम्स हम ऐसे खरीदते हैं विच कम्स इन बॉटल्स, सो डोंट थ्रो इट, यू कैन यूज दोज बॉटल्स टू स्टोर वाटर और टू स्टोर एनी अदर आइटम्स भी आप स्टोर कर सकते हो। मेक यूजफुल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल ना, सो आप you try making some useful items from the waste material, like you can use bottles to make a pen stand, or you can make some toys out of paper or your old toys. Okay, so this way you can reuse the things so that you can reduce the waste. Next, create an item. Activity 5, create an item using waste material that you can give as a gift to someone. So here what you have to do? So you have to create an item. आपको एक ऐसा चीज बनाना है from the waste material. ठीक है, आपको waste material का यूज करके कुछ ऐसा आइटम बनाना है which you can gift to someone. ठीक है, आपको ऐसा बनाना है that you can gift to someone, anyone you can gift. ठीक है, so what could you make? So you can make a very simple pen stand from. So I can make a pen stand from old plastic bottle and gift it to someone. So आप प्लास्टिक बॉटल को हाफ में कट कर सकते हो and then decorate it. Okay, and then you can gift it to someone. It's a very good pen stand. Next, find out. Ask your elders if there is any village, town, or city that they know about which is known for its cleanness. आप अपने एल्डर से पूछ सकते हो क्या वो किसी ऐसे विलेज या टाउन या सिटी को जानते हैं जो बहुत साफ सफाई के लिए फेमस हो. You can share the information you learn from your elders in your class. So जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है अपने एल्डर से आप अपने क्लास के साथ शेयर कर सकते हो. Next is find out from your parents or teachers about the स्वच्छ भारत मिशन. आप उनसे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूछ सकते हो. So let's see. So ask your elders. So uh, generally in India you'll find there are like some cities like Indore is known as the one of the cleanest cities in India. So Indore, Mysore, it is the cleanest cities in India. So they are managing their waste properly. अपने waste को properly manage कर रहे हैं ना, and they are not throwing here and there on the road or public places, and the city is clean. ठीक है, वो इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, they are disposing it properly in the dustbin, and the city is clean. So we can also do that. Find out about the Swachh Bharat mission. So Swachh Bharat mission क्या है? It is a cleanliness campaign and it was started by the government of India to keep the country clean and free from open defecation. ठीक है, सो ये स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव था. ठीक है, सो टू कीप द कंट्री क्लीन ना, अपने कंट्री को साफ रखने के लिए, टू मेक द पीपल अवेयर ना, लोगों को बताने के लिए कि हाउ वी कैन कीप आवर प्लेसेस क्लीन, कैसे हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं और साफ सफाई रखने के बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, एंड free from open defecation. So you know that there are a lot of people who don't have an access to toilet. उनके पास एक toilet नहीं है. So they have to use the open fields. So to make the people ना, उससे क्या होता है कि बहुत सारे बीमारियां फैलती हैं. So to make the people aware about that we should not use the open field for the defecation. We should always use the toilets. Okay.
The next question, activity 6, separate your waste. So two dustbins are drawn below. Write the names of the waste material which will go into each of them. अब देखो यहाँ पे कुछ waste material है and there are two dustbin. One is green and the other is a blue. So you have to tell that which waste should go in which color dustbin. So हमने discuss किया था ना, in the green color dustbin all the वेस्ट विच कैन डीकम्पोज, ऐसे वेस्ट जो डीकम्पोज कर जाते हैं वो हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं, लाइक योर लीव्स ना, ऑल द वेजिटेबल फ्रूट पील्स ना, सो लीव्स, अनियन पील्स, रॉटन फ्रूट, एक्सेल ना, ये सारे क्या होते हैं, ये डीकम्पोज कर जाते हैं, ये सॉइल में इजीली मिल जाते हैं, ठीक है. सो इट विल गो इन द ग्रीन डस्टबिन, ठीक है. एंड in the blue dustbin all the dry waste like plastic bottles, light bulbs, paper, used plastic milk packets, cloth ना, ये सब decompose नहीं करते, so they should go in the blue dustbin, ठीक है. Very simple. Next, right, list the things that you can do to keep your home and a classroom clean. So आप बताओ कि आप क्या कर सकते हो अपने क्लासरूम को और अपने रूम को क्लीन रखने के लिए, अपने घर को क्लीन रखने के लिए आप क्या कर सकते हो. So I can keep my room tidy. I can throw waste in dustbin. आप क्या कर सकते हो अपने सारे वेस्ट को, चाहे वो स्कूल हो या घर हो, you should always throw the waste in the dustbins. I clean my desk regularly. आप स्कूल जाते हो, आप जहाँ बैठते हो, so you should clean it. I can avoid littering. So आप इधर उधर चीजों को नहीं फेंको in the school or in the home after like eating your snacks. You should throw the wrappers in the proper dustbin instead of throwing here and there. So you can avoid littering. Next, make a list of tools used for cleaning in your school or neighborhood. So अब देखो साफ सफाई के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो घर हो या स्कूल हो या नेबरहुड हो, कहीं पे भी हो. We use all these tools for cleaning. So क्या क्या यूज करते हैं? So it is broom, ना, dustpan, mop, garbage bin, cleaning brush. So all these are the tools which you use for cleaning. ठीक है? For cleaning in school and neighborhood. Make a list of cleaning tools used at home. So it is the broom, mop, bucket, dustpan, cleaning cloth. Next. अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. Let us reflect. The first question is, how is waste created? So waste कैसे create होता है? So waste is created through our daily activities such as cooking, eating, shopping, studying, cleaning. Na? So with all these daily activities, we generate a lot of waste. ठीक है? Next question. How can we manage waste? हम waste को कैसे manage कर सकते हैं? So we can manage waste by following 3R. 3R को follow कर सकते हैं. That is reduce. So in the first place हम बहुत मिनिमम से मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस करें ना, बहुत ज़्यादा वेस्ट ना जनरेट करें. Then reuse, reusing the items again and again. Recycle ना. So we should follow the 3R, reduce, reuse and recycle, and by separating waste into different dustbin. So अगर आप सूखे कचड़े को गीले कचड़े के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, we cannot recycle it, हम recycle नहीं कर पाएंगे. So it's better to separate the dry waste and the wet waste separately. So जो wet waste होगा, जो गीला कचड़ा होगा, that can be used to make compost. उससे हम compost बना लेंगे. And the dry waste can be recycled. ठीक है?
लिस्ट प्लास्टिक आइटम्स एंड देयर अल्टरनेटिव्स। अब बहुत लोग बोलेंगे कि the plastic have a lot of a use, how we can replace it na. So there are lot of items which is not made of plastic and we can replace it. So कहीं कहीं पे तो हम बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं ना, लाइक प्लास्टिक बैग को हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ बैग या जूट बैग से रिप्लेस कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी रिप्लेस्ड विद द स्टील बॉटल, ये भी इतना ही स्ट्रांग होता है ना। प्लास्टिक लंच बॉक्स कैन बी रिप्लेस्ड विद द स्टील लंच बॉक्स। प्लास्टिक कप can be replaced with the glass or a steel cup. Plastic straw can be replaced with the paper or metal straw. ठीक है? So this way we can replace a lot of items with the alternatives. और भी बहुत कुछ होगा. So try to minimize the use of the plastic. ठीक है? Next. Name three things for each dustbin. So in the green dustbin, what we can throw in the green dustbin, you have to list three things. So vegetable peels we can throw, leaves, eggshells, no, all these we can throw in the green dustbin. And in the blue dustbin, what we can throw? It is the plastic bottles, paper, no, metal cans, all we can throw it in the blue dustbin. ठीक है? C. Draw in your notebook. Make a poster to show a village or a town that is managing its waste well. So आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है टू शो अ विलेज और अ टाउन। ठीक है, आपको पोस्टर बनाना है एक विलेज और अ टाउन का जो अपने वेस्ट को बहुत प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। गिव योर पोस्टर अ सुटेबल टाइटल, और इस पोस्टर को आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना है। सो यू कैन ड्रॉ अ क्लीन विलेज विद द डस्टबिन, क्लीन रोड्स, ट्रीज, पीपल कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन। आप इस टाइप का एक पोस्टर बना सकते हो। एंड यू कुड नेम द गिव अ टाइटल लाइक अ क्लीन विलेज, हेल्दी विलेज। ठीक है, आप एक टाइटल दे सकते हो। नेक्स्ट, enact in pairs. You can be a clean town and your partner a dirty town. So आपको एक क्लीन टाउन की तरह बिहेव करना है और आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो वो एक डर्टी टाउन की तरह बिहेव करेगा। Engage in a short conversation talking about how you feel about being the way you are. So आपको एक क्लीन टाउन है और एक डर्टी टाउन है, आप दोनों एक दूसरे से बात करो। ठीक है, एंड यू जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ कि आपको कैसा लगता है द वे यू आर। अगर आप क्लीन टाउन हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, एंड इफ यू आर डर्टी टाउन हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, सो आपको ऐसा बात करना है कि आप एक इंसान हो ना। डर्टी टाउन एंड अ क्लीन टाउन आर द पीपल एंड दे आर टॉकिंग, एंड you have to express how you feel. ठीक है, so like this you can write clean town क्या कह सकता है, hello I am clean and beautiful, मैं साफ हूँ और सुंदर हूँ, because my people use dustbin and manage waste properly. So क्लीन टाउन क्या कह रहा है कि मैं साफ हूँ सुंदर हूँ, क्यों? बिकॉज माई पीपल, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो डस्टबिन यूज करते हैं और दे मैनेज द वेस्ट प्रॉपरली, वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। डर्टी टाउन क्या बोलेगा, आई एम डर्टी बिकॉज पीपल थ्रो गार्बेज एवरीवेयर, मैं गंदा इसलिए हूँ क्योंकि लोग कचड़े को हर जगह फेंक देते हैं ना, दे आर नॉट यूजिंग डस्टबिन। क्लीन टाउन क्या कहेगा, पीपल फील हेल्दी एंड हैप्पी इन माई सराउंडिंग। सो क्लीन टाउन में जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, वो कैसे होंगे, वो हेल्दी रहेंगे ना, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, एंड दे विल बी हैप्पी। डर्टी टाउन क्या बोलेगा, आई वॉन्ट माई पीपल टू स्टॉप लिटरिंग एंड कीप मी क्लीन टू। वो चाहता है, डर्टी टाउन बोल रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो गंदगी फैलाना बंद करें और अ, इस टाउन को भी साफ रखें। ठीक है, स्टॉप लिटरिंग एंड कीप मी क्लीन। क्लीन टाउन कह रहा है एवरीवन शुड फॉलो द 3R, हर किसी को 3R फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 3R फॉलो करेंगे हम सब, देन आवर सराउंडिंग विल बी क्लीन। डर्टी टाउन क्या कह रहा है, आई विल इंक्रेज माई पीपल
to do the same. मैं भी अपने लोगों को ये करने के लिए encourage करूँगा. So now you see, the clean town is so happy, dirty town is so sad. So what you want? You want a clean town or a dirty town? We all want a clean town, so try to keep your surrounding clean. Next, uh, next question is, हाउ कैन यू हैव अ जीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी. सो अब देखो हर साल हमारा बर्थडे आता है एंड वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे. सो ट्राई टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विद अ जीरो वेस्ट. सो बर्थडे तो आप सेलिब्रेट करोगे बट जीरो वेस्ट शुड बी क्रिएटेड ना. आप कैसे कर सकते हो? use reusable plates and cups instead of single use plastic के जो प्लेट्स और कप्स आते हैं उसके जगह आप क्या यूज कर सकते हो? रीयूजेबल प्लेट्स. आप सेरामिक के प्लेट्स कप यूज कर सकते हो या स्टील के प्लेट और कप यूज कर सकते हो. सो आपका वेस्ट नहीं जनरेट होगा यहाँ. अवॉइड प्लास्टिक डेकोरेशन. सो इसकी जगह पे आप नेचुरल फ्लावर्स से डेकोरेट कर सकते हो. हाँ, और क्लोथ का यूज कर सकते हो ना डेकोरेशन के लिए. यूज क्लोथ बैनर्स. आप क्लोथ के बैनर लगाओ इंस्टेड ऑफ ऑल दोस प्लास्टिक बैनर्स. सर्व फूड विदाउट डिस्पोजेबल पैकिंग पैकेजिंग. सो जो भी आप फूड सर्व करो इट शुड नॉट हैव अ पैक्ड ना. जैसे बहुत सारे जूस पैकेट्स आते हैं या स्नैक्स पैकेट्स आते हैं. सो डोंट सर्व दैट काइंड ऑफ अ फूड विच हैज अ लॉट ऑफ अ रैपर्स. ठीक है. सेपरेट वेस्ट इनटू डस्टबिन्स. आप दो डस्टबिन रखो, एक में सूखा कचरा एक में गीला कचरा. सो यू कैन सेग्रीगेट द वेस्ट. गिव यूजफुल इको फ्रेंडली रिटर्न गिफ्ट ना. हम रिटर्न गिफ्ट्स भी देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग सम प्लास्टिक टॉयज और एनीथिंग ना which will create a waste, you can give an eco friendly gift like आप seeds दे सकते हो और some flower pots आप दे सकते हो ना, clay flower pots. So this way you can have a zero waste birthday party. So this birthday try to celebrate this kind of a birthday. ठीक है. नेक्स्ट, हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर. क्या आपने वेस्ट को देखा है नेचर में? what happens to the animal waste and the dried leaves in a forest? So yes, there are lot of waste in the nature. अब नेचर में भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं जैसे एनिमल वेस्ट और प्लांट्स जो पत्ते जो सड़ जाते हैं गिरते हैं और सड़ जाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेस्ट. But the animal waste and the dry leaves, they decompose naturally. वो बहुत naturally decompose हो जाते हैं and it become a part of the soil. वो soil में आराम से मिल जाते हैं and ना वो compost बन जाते हैं and it provide the food to the plants. They provide nutrients to the plant. वो plants को nutrients provide करते हैं and help maintain the balance of the nature. ठीक है. वो सॉइल में मिलकर वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते प्लांट को एंड इट हेल्प टू बैलेंस द नेचर. ठीक है. सो with this we have completed all the question answer of this chapter. So if you have any doubt please ask your question in the comment. और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो so please subscribe to the channel. See you in the next class. Till then, bye, take care.